Welcome to our channel Rakshak. So today's topic is shrinking green cover and necessity of conservation of forests. Necessity of conservation of forests. You know that these days rainy season is going on, and what is happening in Solan, Kullu, Shimla, it is visible to us on TV screens. Similarly, what is happening around Kedarnath, Badrinath, high altitude areas, that is also visible. Where the Char Dham Yatra have been stopped because of the landslides, killing of the pilgrims. So the question is, should we have development at the altar of green cover? So this is a very important question. Whether we should go for more developments or we should wait and conserve the forest. We should go for more green cover. We should have more tree plantation. We should cut the rocks only if it is very essential. Otherwise, we should not make highways or new cities or town in the altitude areas where they are vulnerable mostly during rainy season, because the nature of rocks as such is like that. Today you must have read that because of the incessant rain and red alert sounded in the Himachal Pradesh, we have lost 5 human beings, 10 human beings are missing, and there is collateral damage to the buildings also. So keeping this thing in mind, now we will try to understand why you cannot go for excessive rapid development. Excessive rapid development. So there are basically two types of greenhouse gases which are emitted during the course of biodiversity. Number one is the carbon dioxide, which human beings, animals throw out of the respiration. And all the vehicles which are running on the roads, which are operated on the fossil fuels, petrol, diesel, etc., CNG, they emit carbon monoxide or carbon dioxide. So number one problem is the large number of emission of carbon dioxide. And number two problem is the problem of emission of methane. Methane means CH4, emission of methane. Methane is used in the production of ammonia, NH3, hydrogen. It is colorless, odorless gas. But it is thrown out by the agriculture sector also. 30% of the methane produced is by the agriculture sector. We are cultivating paddy fields these days. All these paddy fields are producing methane.
So methane has got a short lifespan. It has got lifespan of 12 years, whereas carbon dioxide has got lifespan of 100 years. So according to Paris climate, which we signed, that all the countries, those who go by Paris climate, they will reduce their temperature by 1.5 degrees Celsius in next 1 decade. So this is basically in theory. In practically, it is not happening. Now, there was a conference in the Baku in which India did not sign the pledge on reducing the methane. Why? Why India did not sign the pledge on reducing the methane? Because India believes that agriculture sector held by Indians is of poor, economically marginalized farmers. It is necessary for our food security. Whatever the rice, staple rice we are producing, it is mostly consumed by our general public. Hence, food security is required and farmers' economy is dependent upon it. So considering this reason, we did not sign the pledge of reducing methane in Baku conference. Whereas we have pledged to reduce the carbon dioxide. So now the question is, how can we reduce both carbon dioxide and methane? It is food for a thought. You give your reply. How can we reduce carbon dioxide and how can we reduce methane? This is the question. First of all is the reduction. We should bring more vehicles which are electrically driven. That is one requirement. It will take a long time because currently vehicles are running on the fossil fuel. Then we should reduce the life of the vehicles as it is happening in Delhi now. That if the vehicle has spent 10 years and is of diesel mode, it will not be given fuel. If vehicle has spent 15 years and it is on petrol mode, it will not be given fuel. So this kind of binding is to be required on the vehicles. Then we have got pollution check controls. We should time to time check the pollution emitted by these vehicles also. So now the question is, what is the utility of methane? What is the utility of methane? Methane is used in our industries. It is used in creating the or manufacturing the hydrogen, which is going to be next energy level, which will be used in our country. So the way forward is that we should go for more plantation. Number one, we should less tackle with the rocks or make highways on these rocks or make new stations on these rocks, as we have decided in the valley of Kashmir also that we'll be developing 10 new towns along the highways, which is being objected by the local Kashmiris. Because they believe that if 10 new towns will come along the highways in Kashmir, it will affect the flora and fauna of the valley. It will affect the biodiversity of the valley and
it will ultimately lead to the more landslides and more pollution. In this regard, we have already have one discussion when we were in the class. We have a video on the channel, Global Warming and Challenges. Global Warming and Challenges. Kindly go through this video also because it is connected. This topic is connected with that. What is global warming and what are the challenges and how it can be reduced? Then there is one article in the Indian Express magazine which I have shared on 28th June. Shrinking green cover, necessity to conserve the forest. Go through that article also. It will help you give a different kind of idea that what is the difference between carbon dioxide and methane, what is their lifespan, what is their utility, how these gases are emitted, and what is the way forward. What is the way forward? Now questions from your side. पूछो पूछो, क्वेश्चन तो पूछा करो. क्वेश्चन पूछना अच्छा होता है. सर जैसे जो बायोफ्यूल्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करने में भी तो ये गैसेस रिलीज होती हैं। हाँ, करेक्ट करेक्ट. तो जैसे वो ऑयल इन्वायरमेंट रिफाइनरी के लिए। में ऑयल रिफाइनरी में हम डीजल पेट्रोल निकालेंगे तो जो है उस प्रोसेस में काफी गैसेस निकलती हैं. जो आपका जैसे अगर आप दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में एक करनाल बाईपास आता है जिसमें बहुत बड़ा पहाड़ सा बना हुआ है कूड़े कचरे का. दीज आर नोन एज लैंडफिल्स. इनको क्या बोलते हैं? लैंडफिल्स. इनमें से भी मीथेन बाहर निकलती है बहुत ज्यादा मात्रा में. जो आपका वेस्ट है, मान लो आपने प्लास्टिक इकट्ठा किया, आपने लिफाफा इकट्ठा किया, आपने सब्जियां छील के फेंक दी, आपने चिकन खाया कुछ और फेंक दिया, इस वेस्ट में से भी जो है मीथेन बाहर निकलती है. हमारे पास कोई अभी सिस्टम ही नहीं है कि हम वेस्ट को ढंग से रिसाइकल कर सकें. पूरी मोहाली के अंदर वी डोंट हैव वेस्ट डिस्पोजल प्लांट. स्टिल वी आर थिंकिंग ऑफ इट. Whereas in America, when I was there for like almost 1 year, each city has got waste disposal plant and they collect the waste in three kind of containers, dump it at the waste disposal plant, and it is reused, regenerated, and emission level of the methane is reduced. And it doesn't cause much of the pollution also. सर इंडिया को उस लेवल पे आने के लिए तो टाइम तो अभी बहुत काम लगेगा करना बहुत। पड़ेगा. इंडिया का तो अभी पहली इंडिया की तो बेसिकली द द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज आवर पॉपुलेशन. नंबर टू इज दैट वी हैव गॉट पॉवर्टी. नंबर थ्री इज दैट those persons who are earning $4 per day, roughly your 18 to 430, 320, 400 rupees. We have declared, World Bank has declared that they are no longer poor. Now, if a man is earning 400 multiplied by 30, 12,000 rupees. So, what is the value of 12,000 rupees in the market today? You analyze yourself. So, it means we have lot of floating population among the lower middle class, among the economically weaker section, among the poor section. They are simply able to make two end meets. So,
country with such a large diversity, such a large population, it is quite difficult to reduce the methane level in our country. Because we did not sign the pledge, we ourselves said that it is not possible for us to reduce the methane. But we will try to tackle the carbon dioxide. Next question. कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके देन। ये अभी जो तेलंगाना में मेडिसिन की फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, इसका क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन? जिसमें बंदे मर गए लगभग 40। आपने पढ़ा होगा अखबारों में, मैंने भेजी भी है कटिंग। बट हेडलाइन ही देखी थी सर बस। हेडलाइन नहीं देखनी है ना, हेडलाइन पता कौन देखता है? हेडलाइन बच्चे देखते हैं। आप लोगों ने तो गहराई तक जाना है किसी भी बात की। यू मस्ट गो टू द डेप्थ ऑफ एन आर्टिकल, फाइंड आउट द लॉजिक, व्हाई इट हैज हैपेंड। देयर इज कोटेशन इन द इंग्लिश, there is quotation in the English that a man who knows what and when, who knows what and when will find a job, will find a job. But a man who knows what, when, and why, what, when, and why, he will become his boss. Why पे आपने रुकना है जाके। कोई भी काम करना है तो ऑफिसर का काम है कि वाई उसके हाथ में जरूर आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होया। That should means our thinking level should be high. ठीक है ना? एक फायर क्रैकर फैक्ट्री है तमिलनाडु में, उसमें बंदे मर गए कल परसों, बहुत सारे आदमी मर गए। ठीक है, तो व्हाई इट इज हैपनिंग? So today we have discussed about the shrinking green cover and necessity of forest conservation. फॉरेस्ट कंजर्वेशन में वे फॉरवर्ड क्या होता है? नंबर वन तो इंडिविजुअल लेवल पे होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाएं, ट्रीज लगाएं, फ्रूट बियरिंग लगाएं, शेडो ट्रीज लगाएं। नंबर दो ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, दे शुड कम अप फॉरवर्ड एंड दे शुड डू इट। Number three, we should have more green reserve areas. Number five, we should not interfere with the forest. If there is a forest, then we should not cut the same land for development of any kind of industrial park. Let it remain forest. As it is happening in somewhere in Karnataka, in Hyderabad, Telangana. They have removed almost 150 acres of trees in that area. So you are depleting your forest wealth. अब बड़े बड़े हाईवेज बनते हैं। अगर आज से 7-8 साल पहले आप जलंधर से चलते और चंडीगढ़ आते तो बहुत बड़े बड़े पेड़ थे इसके आसपास, सड़क के आसपास। बट वो पेड़ किसने काटे, कब काटे, पैसा कहाँ गया, कुछ पता नहीं। बस दो हाईवे निकाल दिए फटाफट और करोड़ों पेड़ जो है काट के फेंक दिए, और मनी किधर गई नोबडी नोस। कितनी उसमें आई और कितनी मैनिपुलेट हो गई नोबडी नोस। तो वी शुड नॉट कट द ट्री कवर। देन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो फॉर मोर ग्रीन कवर। देन ऑल द हाईवेज they should be provided with good tree lines.
both sides of the highway, both sides of the railway. We should have good green cover, keeping the safety distance from the railway line. Then we should have check on the vehicles. एक घर में कितनी गाड़ियों की जरूरत है? 4 की, 5 की, 6 की? अभी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों क्वेश्चन पूछा, दिल्ली में एक घर में कितनी गाड़ियां भाई? 3, 4, 5? कहीं तो स्टॉप लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ। आपने 5-5 गाड़ियां खड़ी कर दी। चंडीगढ़ में भी ये हाल है, एक घर में 3-3 गाड़ियां हैं। तो उसके बदले में हमें क्या चाहिए? गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सिंगापुर में क्या है? सिंगापुर में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू परचेज द कार। द कार इज वेरी कॉस्टली, नंबर वन। नंबर टू, दैट गवर्नमेंट सेज वी डोंट हैव रोड फॉर द कार्स, यू ट्रेवल इन द बसेस, यू ट्रेवल इन द ट्रेन। मेट्रो ट्रेन चल रही हैं, आप ट्रेवल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ पे इंडिया में प्रेस्टीज सिस्टम है। बंदा एक जाएगा, पूरी कार लेके दौड़ जाएगा घर से। क्योंकि हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं। हम जो है 15-15 आधा आधा घंटा जाके देसू माजरा में इंतजार करना पड़ेगा। फिर वो उतार देगी 43 में। फिर 43 से 34 जाना है तो फिर मुझे दूसरी बस लेनी पड़ेगी। वो 35 के मोड़ पे उतार देगी। फिर मुझे पैदल चलना पड़ेगा। तो अगर मैं 3 स्टेप्स में जर्नी पूरी करूंगा, 35 मिनट्स वाली, जो कि 2 घंटे में या 2.5 घंटे में पूरी होगी, तो नेचुरली मैं कन्वीनियंस के लिए अपनी कार ही ले जाता हूँ। तो इस आर्टिकल को आप दोबारा पढ़िए इंडियन एक्सप्रेस में। और साथ में जो ग्लोबल वार्मिंग पे वीडियो है उसको दोबारा से देखिए। आज से 3-4 महीने पहले की वीडियो है, उसको दोबारा देखिए। देन यू विल हैव गुड आइडिया हाउ टू राइट एन essay ऑन व्हाई फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज द नेसेसिटी एट द मोमेंट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन नेसेसिटी क्यों है? चलो, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।